Hello guys, I am back with another new video. Today I will show you how we can fix these issues. Unable to add server, host not found, and another error is authentication server could not be contacted. Error code is 5200. Let's fix this. ये both issues हमें उस वक्त फेस करना पड़ सकता है जब हम मैक क्लाइंट मशीन को विंडोज सर्वर डोमेन के साथ ज्वाइन करते हैं। उस वक्त हमें ये इशू फेस करना पड़ सकता है। सो मैं डोमेन के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। लेट्स सी क्या इशू आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अनेबल टू ऐड सर्वर, ऑथेंटिकेशन सर्वर कुड नॉट बी contacted. Unable to add server, host not found, error code is 9007. ये इशू फिक्स करने के लिए आपको नेटवर्क में जाना है और यहाँ देख रहे हैं आप डीएनएस सर्वर और सर्च डोमेन। आपको डीएनएस में जाके ये मैनुअली मेंशन करना है। एडवांस डीएनएस, आपको डीएनएस सर्वर में सर्वर का आईपी मेंशन करना है 192.168.10.129 एंड सर्च डोमेन। सर्च डोमेन में डोमेन नेम डाल दीजिए। क्लिक ओके, अप्लाई। अब हम दोबारा जाते हैं यूजर एंड ग्रुप एंड लॉग इन डिटेल्स। क्लिक द लॉग टू मेक चेंजेस। network account server, join, mention here domain server name, ad admin user is administrator, and mention your password. Click OK. Now you can see now getting active directory setting. Now you can see network account server also having green icon. That means we are already joined the domain server. Let's log in with another username and password. It means we are successfully logged in with our client machine. Thank you for watching guys. If you like this video, don't forget to subscribe our channel for latest update.